Hello there, everybody. Welcome back. Welcome back. Today we're going to be watching another Career247 video. And as you can see, viral video of Pakistan Defense Minister exposing the USA. America uses war for profit. I mean, I think everyone kind of knew this already. It's unfortunately been the USA's, playbook for what, 80 years now. Yeah, I mean, a very long time, an exorbitant amount of time. But I don't know what this viral video could be. So we're gonna watch and we're gonna learn and we're gonna figure some things out. I really like this channel. Link to this video will be in the description down below. I always put the link to the videos of every reaction, every commentary that I do. I put the link to the video in the description down below, so make sure to go and check it out. We'll see what this is all about. We will see what this is all about. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मुझे पता है आप में से कई लोग पूछ रहे होंगे कि सेल्फ गोल करने वाले ख्वाजा आसिफ कहां पर गए, लंबे समय से ये दिखे नहीं है। वेल रिसेंटली इनकी एक वायरल वीडियो सामने आई है जहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ओपनली ये कह रहे हैं कि यूएसए जंग से, वॉर से सिर्फ प्रॉफिट कमाता है और खुलकर इन्होंने यूएसए को ब्लेम कर दिया है। यहां पे आप देख पाओगे He's openly blamed the USA. Well, the thing is, the US will sell arms to both sides if possible. If two nations are going to war, the USA is like, well, hey, guess what? Why don't you use my weapon, use my jets, use my missiles, use my defense system. Don't buy anyone else's. Oh, and if you're going to use it, did you know the people that you're fighting, they're using it as well. So you probably should use ours too. That's the that's what the US does. अमेरिका प्रॉफिट्स फ्रॉम वॉर्स। और ये जो इनकी पूरी स्टेटमेंट अभी मैं आपको दिखाऊंगा To उसमें ना boost सिर्फ the arm industry. Pakistan blames US for global conflicts to boost arms industry. ने यूएसए Interesting. पर आरोप लगा दिए हैं बहुत सारे। चाइना की बहुत सारी तारीफ करी है कि चाइना को देखिए बिल्कुल China's दो doing the तीर same. वॉर करता है। China does the same thing. Don't praise China. China does the exact same thing. यूएसए को देखिए बहुत सारी वॉर्स करते हैं ये लोग और उसके बाद दोनों साइड्स को हथियार भेज देते हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये अपने आप में। आप सोशल मीडिया पे आप देखोगे ना आज के समय, चाहे टर्किश सोशल मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया, हर कोई इस वीडियो को शेयर कर रहा है। सैड बात है कि अभी तक इंडियन मीडिया ने ना एक्सटेंसिवली इस क्लिप को दुनिया तक पहुंचाया नहीं है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, हमारे किसी मिनिस्टर ने ऐसी स्टेटमेंट दी होती ना, पाकिस्तानी राइटर्स, इनके जर्नलिस्ट ग्लोबली जहां भी लिखते हैं, इस स्टेटमेंट को हर जगह फैला देते हैं और ये कहते हैं कि इंडिया ने ओपनली यूएसए को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने ले आते ये न्यूज ऑल टुगेदर, इतने सारे इस पे लिखे जाते। मगर यहीं पे मैं कहूंगा भारत नैरेटिव वॉरफेयर में हार जाता है जब ख्वाजा आसिफ जैसा डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के पास है और ऐसी स्टेटमेंट्स ये दे रहा है। इट इज ट्रैजिक कि हम ऐसी स्टेटमेंट को वर्ल्ड मीडिया के सामने, अमेरिकन के सामने नहीं पहुंचा रहे कि ये वो पाकिस्तान है जो एक्चुअली में यूएस के बारे में क्या सोचता है ना। आप सोशल मीडिया पे जाओगे, चाहे टर्की का सोशल मीडिया हो या Oh, social media. Oh man. Good old X, right? Big breaking. Pakistan also accepted harsh reality of USA. The defense minister said US generates war for the military industry to earn इंडियन money. सोशल मीडिया हो। Bombshell. Pakistan claims U.S. fuels war between two countries to sell weapons and make money. Is Pakistan dodging its role in its regional chaos, or is the U.S. cashing in on conflict? Who is really pulling the strings? Well, so when it comes to giving weapons to Pakistan, I do believe the U.S. started the initiation of stopping military movement of like arsenal to Pakistan in 2018. Earlier in the year, in February, I believe they had they fulfilled a prior commitment, and that's when the U.S. gave Pakistan some supplies to keep their jets going. But that was like a prior commitment made from like the last administration, the Joe Biden administration. But I don't know if there's any like actual
movement of military arms into Pakistan currently. There's plenty before, don't get me wrong. There was plenty before, but I don't think there's any currently. And one could say, "Oh, the IMF," but the IMF is, it's a that International Money Fund is a loan. The U.S., sure, the U.S. pays quite a bit into it. They have like 16% operating stake into it, like 16 or 17%. I hate the fact that Pakistan is getting that money. I think all the U.S. should try to stop it, and the other nations like Europe should try to stop it as well. But that is not like direct arms sell, right? Anyways, let's continue the video. हो हर जगह आपको ये वीडियो मिलेगी, लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ की। और ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अचानक से पाकिस्तान ये सब बातें क्यों बोल रहा है। You know, everywhere in the world, Americans have been doing it for the last maybe 100 years. कि they generate wars. उन्होंने 80 तकरीबन years. 260 जंगें लड़ी हैं अब तक अमेरिका ने, चाइना ने 3 लड़ी हैं. They still make money. But वहाँ पे military industry What do you mean? complex है. China. Okay, he's China is just. I don't know. He's softballing China a little bit here. It's an established industry जो मेरे ख्याल उनकी GDP का मेजर पोर्शन है. उसके लिए उनको जंगें करनी पड़ती है. कभी इसको लड़ा दिया, कभी किसी और को लड़ा दिया, और फिर जो है उस लड़ाई में कमा के पैसे घर चले गए. यही अफ़गानिस्तान में उन्होंने किया है, यही उन्होंने सीरिया में, इजिप्ट में, लिबिया में. These countries who were really rich, very rich countries, they are bankrupt now. ना ये वीडियो कितने दिन पुरानी है इसके बारे में मैं कह नहीं सकता, बट मोस्ट रिसेंटली ही ये वीडियो सामने आई है इंटरनेट पर। और जो बातें यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने करी है, दिस शुड रियली शॉक अमेरिकन्स, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पिछले 100 सालों में Why should it shock Americans? I think most Americans know. Huh. अमेरिकन्स ने लगातार जंगें करवाई है। दे हैव फॉट 260 वॉर्स। नाउ अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, पाकिस्तान आज के समय लिटरली चाइना के एक माउथपीस की तरह बात कर रहा है। Yeah, that's what I was going to say. Pakistan is the Islamic arm of China. इसके पीछे कई रीजन है। इनको उम्मीद है कि चाइना से इनको 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 फाइटर जेट बहुत ही जल्द इनको मिल जाएगा। China इसके won't अलावा give this चाइना to इनको them. डेट सिचुएशन में हेल्प कर सकती है। China wouldn't give them the J-35s after Pakistan. Sorry, China wouldn't give them the J-35s after Pakistan. Showed how utterly failure they were with the J-17s. बहुत सी उम्मीदें हैं यहाँ पर पाकिस्तान को, और इसलिए ये खुल के इनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यूएसए ने 260 जंगें लड़ी है, जबकि चाइना सिर्फ 3 जंगों में इन्वॉल्व रहा है। आगे कहते हैं यूएस लगातार इन जंगों से पैसा कमाता है। इनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है, एक एस्टैब्लिश सेक्टर है, इनकी जीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट इज व्हाई दे कीप क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट, हर जगह आप देख लीजिए। ये सब एक टाइम पर एक रिच कंट्री हुआ करते थे, आज के समय ये बैंकरप्ट है इनके हिसाब से। नाउ ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट को लेकर ऑनलाइन कई इंडियंस ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर यहाँ पर कह रहा था कि देखिए, जब पाकिस्तान को हेल्प चाहिए होती है तब ये चले जाते हैं यूएसए के पास, जब इनको इंडिया से बचना होता है तब ये यूएसए की हेल्प मांगते हैं, मगर जैसे ही इनका काम निकल गया, आईएमएफ ने पैसे रिलीज कर दिए और जो इंडिया से भी पिटाई हो रही थी वो भी रुक गई। अचानक से ये खुलकर यूएसए के अगेंस्ट ब्लेम कर रहे हैं। आई मीन देखो, ये बात तो ऑलरेडी आपको पता होगी। ऑन अ रेगुलर बेसिस पाकिस्तान की सड़कों पर 3 देशों के झंडे जलाए जाते हैं, इंडिया, यूएसए एंड इजराइल। इट इज अ कॉमन साइट। इधर आप लोग देख पाओगे, चाहे True, डोनाल्ड it ट्रंप का आप is. जमाना Wow, they're burning. Who printed these out? Who printed giant flags of Donald Trump out? That's weird. Weird. In 2018. Hey, this is like right around when they stopped giving military assistance to Pakistan. I wonder if that was the cause. Let me actually look this up. Okay, so just reading these last 2 paragraphs right here. In 2011, the Obama administration suspended more than 1/3 of all military assistance, totaling approximately $800 million, due to Osama bin Laden-related controversy. So, because of Osama bin Laden, they should have cut all military assistance, but they suspended $800 million worth. The reduction encompassed funds designed for military hardware and reimbursement for specific Pakistan security expenses, including $300 million allocated for counterinsurgency efforts.
See how well that worked. In August 2017, okay, so 2017 was when it actually happened. The Trump administration informed Congress that it was placing 255 million in military assistance to Pakistan into an escrow account. Access to these funds by Islamabad would be contingent upon Pakistan taking stronger action against terror networks within its borders that were conducting attacks in neighboring Afghanistan. Okay. As the United States canceled all military aid to Pakistan in the 2010s, Pakistan increasingly turned to military cooperation with China. So, interesting. Very interesting. Oh, yeah, look at this. Okay, so the photo of them burning, is this potentially the same time frame here? January 14th, this was January 4th, so 10 days prior. U.S. suspends most security assistance to Pakistan after a harshly worded New Year's Day tweet by President Trump, yada, yada, yada. The cutoff is not permanent, Newart said, and only affects military assistance. Civilian assistance is not affected. Okay. Newart told reports that the suspension will remain in effect until Pakistan takes decisive action against groups such as Taliban that are destabilizing the region and targeting U.S. personnel. Although Pakistan certainly has been helpful in some instances, she said, they are not taking steps that need to fight terrorists. So the U.S. suspended military aid because they weren't fighting the terrorists? In the first tweet in 2018, Trump said U.S. has foolishly given Pakistan more than $33 billion in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies and deceit, thinking our leaders as fools. They gave safe havens to terrorists we hunt in Afghanistan with little help, no more. Okay. All right. Let's get back to the video here. माना देख लो, उससे पहले बराक ओबामा का टाइम आप अगर देखो तो ये लोग इस तरीके से इजराइल और यूएस के झंडे जलाना पसंद करते हैं। आम पाकिस्तानी इंडिया, यूएस, इजराइल इन तीनों कंट्रीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और इनके जो मिनिस्टर्स हैं, ये ख्वाजा आसिफ वगैरह, इनको अच्छे से पता है। इसलिए टाइम टू टाइम जब इनका काम निकल जाता है, जब इनको पता लग जाता है कि ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग वी आर ओके, फिर ये चुपचाप यूएसए की बुराई भी करना शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आप देखोगे आज के समय सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर है कि इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन को लेकर यूएस कुछ भी नहीं बोल रहा। पाकिस्तान को उम्मीद थी It's because the U.S. doesn't really care about Pakistan right now. यूएस, वर्ल्ड बैंक वगैरह कुछ स्टेटमेंट देंगे, कुछ पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। रिसेंटली पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी के इशू को यूएन में लेकर चला गया। इंडिया ने कैटेगोरिकली एक बहुत अच्छा जवाब दिया। इंडिया ने यह कहा कि देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। लिटरली पाकिस्तान एक एपिसेंटर है आतंकवाद का। Pakistan is the epicenter of terrorism. Pakistan is the epicenter of terrorism, just like he said. मारे जा चुके हैं आतंकवादी हमलों में, जो डायरेक्टली पाकिस्तान में प्लान किए जाते हैं। जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान से आते हैं भारत में, और 20,000 इंडियंस को ओवर द इयर्स ये मार चुके हैं। पाकिस्तान कई बार भारत पे वॉर डिक्लेयर कर चुका है, और इंडस वाटर ट्रीटी का जो स्पिरिट है, ये पाकिस्तान ने ही वायलेट कर दिया है बाय इन्फ्लिक्टिंग 3 वॉर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेरर अटैक्स ऑन इंडिया। ये बात ओपनली भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने बोली है यूनाइटेड नेशंस में। और पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सिंस आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये लोग हैं, इनकी एक मेंबरशिप है, कुछ यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो स्टेटमेंट है फ्रॉम इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, ये सुनिए। I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. नाउ आप पूरा रिप्लाई देखोगे, भारत का यूएन में बहुत अच्छा था एंड इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। इवन आप अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो तो इंडिया मेड अ लॉट ऑफ सेंस ओवर हियर। बट प्रॉब्लम ये है, हमारा ग्लोबल नैरेटिव थ्रू इंटरनेशनल मीडिया बहुत कमजोर है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यूएसए पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। ये वीडियो ख्वाजा आसिफ की वायरल कर देनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन को पता लगेगा नहीं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या सोचते हैं इनके बारे में, किस तरीके से I know exactly what he thinks. अमेरिका के झंडे जलाए जाते हैं पाकिस्तान में। I ईरान know American flags are being burnt in Pakistan. भी होता है फॉर सम और रीजन। यूएस मीडिया कॉन्स्टेंटली ईरान पर फोकस करेगा कि देखिए ईरान में यूएस के झंडे जलाए जा रहे हैं, बट पाकिस्तान में जो इतने लंबे समय से होता आ रहा है,
फॉर सम Again, ऑड it's रीजन कई crazy. अमेरिकन्स को इसके बारे में It पता is नहीं है, वो very मान के odd. चलते हैं कि पाकिस्तान भी उनका I कोई know about it. I've known about it, and I've always said I've always said Pakistan has been the hub of terrorism. You can go back to any old live stream or video that I've ever done, and you can look that up, and you can clearly see when I've said that. फ्रेंडली कंट्री है, कोई एलाई है। सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू वर्क ऑन दिस। हमारा जो ग्लोबल नैरेटिव है बहुत कमजोर है। पाकिस्तान हमको इतने सारे मौके दे I रहा है can ऐसी help. स्टेटमेंट्स करके। आई I थिंक can I can help. I can help. I can help. I'll try to talk to my fellow Americans. We already know the Americans know that the military and the government, and trust me, most Americans hate this fact. We know that the USA military and the government make a ton of money by selling arms to countries in conflict. We 100% know that, and we hate it. Okay, but many of them don't know about these issues, like within Pakistan. And I'll try to spread word as much as I can. It'll be tough. I mean, it honestly, it will be tough to fight through this propaganda narrative that the legacy media pushes out. I'm but just a a normal man. I'm a normal dude, but I'll try to do my part. जो हमारे आज के समय ग्लोबल नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जो लोग गए हैं, शशि थरूर साहब, ओवैसी साहब, इनको ये इशू रेज करना चाहिए कि दिस इज द कंट्री दैट द अमेरिकन्स आर सपोर्टिंग, दिस इज द कंट्री दैट यूजेस अमेरिकन F-16 फाइटर जेट्स। अमेरिका के $400 मिलियन मिलते हैं पाकिस्तान को फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दीज फाइटर जेट्स। तब भी ऐसी बातें ये करते हैं यूएसए के बारे में। और आने वाले समय में आप देखोगे जैसे जैसे चाइनीज हार्डवेयर, डिफेंस हार्डवेयर पाकिस्तान में बढ़ता जाएगा, ये ऐसी स्टेटमेंट्स और कॉमन हो जाएगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान लिटरली चाइना की एक वेसल स्टेट की तरह स्टेटमेंट्स दिया करेगा। और आने वाले समय में देखिए Well, it's पाकिस्तान because they are a vassal state of China. Again, Pakistan is the Islamic arm of China. और यूएस से रिलेटेड बहुत सी मेजर डेवलपमेंट्स आने वाली हैं। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए करियर 24 All right, PD10, everyone. PD10, everyone. Interesting. I hadn't seen anything about that. Surprise, right? When you're looking at Western media, you're not going to see stuff like that. So that's why I do subscribe to Career247, so I can get these additional viewpoints. These alternative has bad connotations these days, but alternative news outlets to get more of an insight. Pakistan Defense Minister is one of the few person in Pakistan who speaks the truth unintentionally. For the first time, I can support this statement only. First time I support statement of the Pakistan minister. He said the truth, but unknowingly. Well, partial truth. The whole China bit. He's glazing China. War is destruction. War is business. What he said is exactly right. No matter how Asif is, this time he said the right thing about the USA. USA, like the person speaks truth. I like him. Now you look. Now you are gone, son. See, what I want. I love my country. Okay, I love my country. I think everyone should be a nationalist and support and love your own country. The one thing I dislike about my country, though, and you should be allowed to say things you dislike about your country. The one thing I dislike about my country is the fact that my taxpayer money gets thrown around the entire world, and for whatever reason, the government, I should say, thinks that we should be world police. Why? Why is my tax money going to Pakistan? Why is my tax money going to USAID? Why is my tax money going to, IMF loans to Pakistan? Why? Why is it doing that? I want the US to be more focused on internal issues. There are a lot of internal issues going on in the USA right now. There's a huge drug crisis that's happening in major cities all across the nation. There's the whole immigration crisis issue. Millions of unvetted illegal aliens came pouring through our borders over the past couple years. We need to focus in more and harder on that.
I don't know. I don't know, man. There's only so much I can do. I'm just one man, you know? I'm just one man. Link to the video will be in the description down below. If you like my commentary, leave a comment, subscribe, and I'll catch you on the next one, okay? Take care, goodbye.